good morning and good evening. Let's begin with the Friday study circle. And before we start with the passages of the Sunlit path, let's take another minute or two and ingather our consciousness and become more fully present with the help of our breath with this mantra. So we'll give ourselves another minute. Thank you. So invoking Mother's and Aurobindo presence and grace as we take up another passage from the Sunlit path. So last week we had taken up the topic strengthen the will, and it was where Mother had said that how, like you strengthen the muscle, you have to strengthen your will, you have to practice strengthening your will. And today we have to take up how to will truly. So under this session of sincerity, vigilance, not session, sorry, section of sincerity, vigilance and willpower, this is the last passage. And after that, again, a very, very interesting section of other persons and forces, because we are so influenced and whatnot by everything happening around us. So this really gives us a lot of light. But right now, we'll be taking up how to will truly. So if anybody has the capacity, they can read the passage for us. Thank you. Yes. Both passages or just the first paragraph? Yeah, complete, please. How to will truly. To learn how to will is a very important thing. And to will truly, you must unify your being. In fact, to be a being, one must first unify oneself. If one is pulled by absolutely opposite tendencies, if one spends three-fourths of his life without being conscious of himself and the reasons why he does things, is one a real being? One does not exist. One is a mass of influences, movements, forces, actions, reactions, but one is not a being. One begins to become a being when he begins to have a will. And one can't have a will unless he is unified. And when you have a will, you will be able to say to the divine, I want what you want, but not before that. Because in order to want what the divine wants, you must have a will. Otherwise, you can will nothing at all. You would like to, you would like it very much. You would very much like to want what the divine wants to do. You don't possess a will to give to him and to put at his service.
Ma'am, I'll just read the second paragraph one more time. And when you have a will, you will be able to say to the divine, I want, I want what you want, but not before that. Because in order to want what the divine wants, you must have a will. Otherwise, you can will nothing at all. You would like to, you would like it very much, you would very much like to want what the divine wants to do. You don't possess a will to give to him and to put at his service. Can you please read once more from the beginning? Ma'am, you are on You mute. you muted. Yeah, the universe is telling me something. Okay, so would anybody like to read it again? Anybody else, maybe the whole passage as Chetna has requested. Chetna, do Sujata you ji, have Sujata ji? Yeah. How to will truly. To learn how to will is a very important thing. And to will truly, you must unify your being. In fact, to be a being, one must first unify oneself. If one is pulled by absolutely opposite tendencies, if one spends three-fourths of his life without being conscious of himself and the reasons why he does things, is one a real being? One does not exist. One is a mass of influences, movements, forces, actions, reactions. But one is not a being. One begins to become a being when he begins to have a will. And one can't have a will unless he is unified. And when you have a will, you will be able to say to the divine, I want what you want, but not before that. Because in order to want what the divine wants, you must have a will. Otherwise, you can will nothing at all. You would like to, you would like it very much. You would very much like to want what the divine wants to do. You don't possess a will to give to him and to put at his service. Thank you. Yeah, thank you, Sujata. I think a very beautiful passage again, and will is something that a lot of us realize that, how here very beautifully her mother has talked about unifying the being, because one feels that a part of me feels about this so strongly, and yet the other part is pulling me back. Or, like we lot of time lack initiative, or it's like we are always just following where the events are going, where others are going. A lot of times, it's like, and I think we discussed it in the harmony circle, that it's like, everybody is a boat. And a lot of times, because we don't know where I want to steer my boat, I'll just, put it on somebody else's boat and see, okay, at least somebody else knows where they are going. Maybe we would like to believe that. And a lot of times, none of us do, a lot of us don't. And that's why one feels, like unmotivated, and why is life like this and stuff, because one doesn't even know where one's boat is going. So it was so beautiful that first you need to see where you want to direct your boat to, and then you can give it to the divine, that he can direct you, he can lead you, or use you, or take you towards whatever is
where he wants to take you. So cannot be stressed enough that to learn how to will is a very important thing. It could sound silly, right? Yes, I know what to do. I know what, and that's how I've been living. How would I be living without a will? And yet, when we see, when we, go to the root of things about why I'm doing this, what I'm doing that for, like J. Krishnamurti says, right, that I say it's my life, I say it's my goal, and yet I'm just, like, say, a bag of conditionings, different forces, not forces, he said, but conditioning, the things I've picked from here and there, and I say, this is mine, this is me. And one realizes that's not true, because when we question, why am I reacting like this, why am I here, a lot of times we don't have answers. It's just because that's where I'm expected to be. That's so natural, it's like there's some things that are so strongly steering us in our lives, the societies, the norms, the settlements, the ages, that by this age you must do this, after this, that's the obvious thing, that I don't usually use my willpower or will to see where I want to. So this unification, I think we can talk about in more detail. So before we do that, if anybody has any reflections or anything they felt when they read it. Taruk, I want to understand the second line. And to will truly, you must unify your being. So, unify your being is what? Yeah. So it is like, how I understand is that how when I want something, like I say, okay, this is important to me, I want this. But there are so many things that pull me back, right? Like there would be, I don't know, like say doubt that, oh, you're not capable of it. How will you do it? Or, that doesn't make sense. Or if I do this, what about my comfort? If I do that, the mind is saying something, maybe the vital is saying something else. Like the mind says this is the way, but the emotion says, no, but I can't do that. So, it's like I'm not one, I am many inside me, right? It feels I am one person because it appears that there's one body, one face, and there has to be consistency. But if I look inside, if I see how I reason things out and how mostly a lot of times I go around in circles and there's not much initiative or movement forward. When I look into that, I see there's a lot of contradictions within me. One part wanting to move forward, the other pulling it back, one wanting to go right, the other wanting to go left. As a result, I mostly stay where I am or make very little progress. Even, that a diagram that mother had drawn, I'll just pull it up, I would have it. That, how the path of yoga, I think that also I remember, I would say, would fall under this. Just give me 1 second. I think we all know what I'm talking about, but I'll just put it. So, this one that mother had drawn for a sadhak, that how do we usually proceed? Like, so the bottom circle is us, maybe the upper square is the destination, it's where we want to go, but which is a goal in integral yoga or any other yoga. So she had said that these curvy things are how a normal ordinary person would walk. He's also going there only, how mother says that thy victory is certain. But because I'm not one, because I have so many things I have to counter and counter. So it's like this is how I go. But if the being is unified, if one is fully, say, devoted, surrendered, so the straight line is the path you can follow. But mostly, this is how I go because everything takes time and, fluctuations here and there. So I guess,
yeah, for me, that would be something that would come to me. And it's a weird realization when you realize that strange that I'm not one, I'm many. When you start realizing how the being is thinking, working, and a lot of times stuck in places where one would not have wanted to be in the first place. So that comes because of the lack of will, or this unification. So please, I think that's a very important thing. We should put more light on it. So welcoming other angles and light. Ma'am, can you open that passage one more time, please? Yeah. So in the second passage, paragraph. Yeah, Jagan, let's just, should we first take this one? Uh, Or is this, that's okay. Yeah, I'll wait, no problem. you start. I'm sorry, I shouldn't have said anything, but I thought it was about unification. But please, what is it that you wanted to Exactly, say? that is what it's about. So the Okay, okay, unification. okay. So, you know, when, one of the sessions I said that my aim is to find a name, and that's also because you helped me with how to recognize it. So my aim is to find a name only. So where will my boat be directed to? Because unification happens when I know, right, where my boat is going, and then I can put in my effort. So if I my effort is to find an aim, so is that even like how do I move my boat towards the unknown aim that I'm trying to discover? I think I mean, again, have lot of responses, but the one thing that's coming to me is, how we talk about maybe neti, that, you see things and then you experience and you see, okay, this is not it, this is not it, till you find something which it is. So it's about being open. It's about, okay, not just sitting and saying, I don't have a name and I want a aim. It won't come like that. So Yes. one would go out, one would venture, steer in different directions. And I mean, using the example or the analogy that we are using, and see where one wants their boat to be at. Thank you. I think Mother has said with regards to how to find a purpose to one's life, since everyone has a purpose, but we don't know what that is. और हम देखेंगे तो हमारा जो attitude है, our attitude is not really good. Whatever work we are doing, our attitude usually is not very sincere. We take some work but we don't finish it, we lag. और we do it in a way कि मुझको क्या मिल रहा है इससे, क्यों करूँ मैं, इतनी क्या जल्दी है. And if your boss or whoever is the lead is telling you to do it in some way, your ego will clash. You would say that, I want to do it this way. So we don't have a good attitude towards work in general. And Mother says that before we all reach to what is my mission in life, which is I think, which comes forward only when we more and more unify or get in touch with our inner being, rather than staying with the jumping mind all the time, because there is nothing but confusion all the time. There is nothing but confusion. So when we more and more stay with our inner being, there is more silence and peace in the being. There it can happen that slowly an opening happens and you realize, okay, this is my mission in life and this is the direction I want to take. But Mother says that before you reach that place where this opening happens, at least have a good attitude towards work. So she says that whatever you get, आपको झाड़ू लगाने को मिला है, आप sincerity से करो. हम नहीं करते. We all know what we do. हम नहीं करते. हमारी एक तो ईगो इतनी जबरदस्त आड़े आती है बीच में कि उसने कह दिया तो मैं तो पक्का नहीं कर रहा अब तो. Especially with bosses and team members, we don't have a good team spirit. We don't have good attitude towards servitude. She uses the word servitude. That you should, whatever little work is assigned to you,
do it as sincerely as possible, and inside you should have the attitude ki I want to do it even more sincerely and offer the work like a service to the divine, knowing, she says, knowing that this is not my true calling yet, I know, बट अभी जो मिला हुआ है कम से कम वो तो ढंग से कर लें. हम क्या करते हैं, हम आगे की चाह में अभी अपना जो जीवन है वो बर्बाद करते हैं, और जो अभी की अपॉर्चुनिटी है उसके लिए बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं. वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये क्या है, आई एम नॉट बोर्न फॉर दिस, कोई और करे, इसको करना है तो. सो हमारा जो एटीट्यूड है वो वर्क के प्रति बेटर धीरे धीरे मदर सेज होना चाहिए. इट शुड बी अ एटीट्यूड ऑफ सर्विट्यूड. एंड श्रद्धा भाव से जब हम कोई भी काम करते हैं, धीरे 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 धीरे, एज दे से, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द गुरु अपीयर्स, तो हम पात्र बन जाते हैं अपने मिशन तक पहुंचने के. उससे पहले हम पात्र नहीं है, इसलिए वो मिलेगा भी नहीं. आप ढूंढते रहो, ग्रोप इन द डार्क, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना. वो एज इफ मेरी पनिशमेंट है कि पहले तू सिंसियर हो तब मिलेगा. जैसे बच्चे को बोला कि अच्छा जब तक तू टेंट्रम कर रहा है तब तक तो पक्का तेरे को आइसक्रीम नहीं मिलेगी, बट जब रिलैक्स हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा, तब हो सकता है शायद मिले. सो पात्र बनो, आप डिजर्व करो उसको. एंड मदर ऑल्सो, वी सी इन आश्रम, many competitions were held. Mother, we used to take dictations बच्चों की फ्रेंच में, other languages, and then she would mark in a diary, अच्छा इस बच्चे की आज इतनी गलतियां हुई, इसका पूरा राइट था, पूरा राइट था, पूरा राइट था. And when you have 10 ticks like that, पूरा राइट, पूरा राइट, पूरा राइट 10 times, then she will give one marble or one toffee or one keychain. So और हम कैसे टॉफी, हम तो ऐसे ही बांटते हैं टॉफियां, कोई वैल्यू ही नहीं है. That's why we live in abundance. So we take it for granted. We don't have value for these things. In earlier times, there must be much value for all these things. तो हम अपना अगर एटीट्यूड, कमिंग बैक टू द एम क्वेश्चन, कि माना मुझे अभी अपना ट्रू एम नहीं पता है, बट पहली बात तो आपने बोला कि एस्पिरेशन है कि मैं जानना चाहूँगा, एंड जब तक मुझे वो मिलता है, इन द मीन टाइम वॉट एवर लिटल इज कमिंग ऑन माई हैंड, डिवाइन सेंड, whatever little, that has to be done with Shraddha Bhav, with an attitude of servitude, doing as best as possible. And it cannot be that you don't reach a point in time that you finally say that, okay, now it seems my direction, I know. और जो यूनिफिकेशन वाला एस्पेक्ट है, there is also a thought and aphorism of Sri Aurobindo about willings करके है वो, when we must have passed beyond willings, then we will have power, something like that. So maybe that we can either be shared on the WhatsApp group, we can read in our own time. Yeah, so it's when we move beyond willings, Hmm. then we shall have power. Power. Effort was the helper, effort is the power. बिल्कुल, या है ना. तो विलिंग्स वही होगी जो अभी तरु स्टार्टिंग में बता रही थी ना. अब मेरा पेस, जैसे एक एग्जांपल क्या हो सकता है, हम जो कॉन्ट्रडिक्टरी विलिंग्स है, विच वाज ऑलरेडी शेयर्ड, बट जस्ट टू इलैबोरेट ऑन इट, कि मैंने एक दिन एम सेट किया कि अच्छा मेरा एम है टू बी वेरी पीसफुल ऑल द टाइम, इररेस्पेक्टिव ऑफ द आउटर सर्कमस्टेंस. ठीक है, आपने एक दिन वो सेट किया. बाय द टाइम इट इज आफ्टरनून एंड इवनिंग, इतनी सारी चीजें बीच में आएंगी जो बोलेंगे भैया पीस गई भाड़ में, पहले मैं यहाँ पे अपना जरा प्रभुत्व जमा लूं कि मैं हूं यहाँ पे, आई एम द वन हु इज डोमिनेटिंग. तो ऐसे हम करते हैं, है ना. वो उठाते हैं गुरुमाला और उसको झाड़ी में फेंकते हैं, जैसे कबीर जी कहते हैं ना, ई ना जाने कछु नहीं जाने, नी जाने गुरुमाला, कब लग पहरी कब लग तोड़ी, छोड़ तोड़िया फेंक दी झाड़ा में, कोई फर्क नहीं पड़ता. बड़ी सुंदर तरीके से ये मैं गोंग लेके आई थी, सिंगिंग बोल होता है, पड़ा है धूल खा रहा है ना. तो ये हम सबके साथ होता है, टाइम टू टाइम वी गिव, ये इम्पोर्टेंट, ये करेंगे, ये करेंगे. बाय द टाइम it is a little, it begins to fade, and it fades because of ignorance. Ignorance is the root cause of our misery. Since we are ignorant, it fades. हम फिर उस चीज को वैल्यू नहीं देते जो हमको हितकर है हमारे लिए, हम उस चीज को वैल्यू देते हैं जिससे हमारी ईगो सब्सटेंशिएट होती है. तो यहाँ पे वैल्यू है रिमाइंडर्स की,
whether reading it, listening to it, reminding, दीवारों पे चिपका दिया कि भैया मुझे याद रहे मैं भुलक्कड़ हूँ, वो कुछ भी हो सकता है। श्री अरबिंदो मदर की फोटो चिपका दी ताकि मतलब उनको देख के तो गलत काम नहीं करोगे। कभी कभी हो सकता है, हम करते भी हैं, उनके सामने भी करते हैं, बट so that's why we have to keep on reminding ourselves whichever way that I want peace at any cost, and then for whatever whatever I have to do for that I will do, है ना। तो प्रणब दा ने एक बार फिजिकल एजुकेशन के जो हेड थे वहां पे, तो उन्होंने एक मैसेज लिख के दिया था, एंड दैट वाज समथिंग लाइक हार्मनी एट एनी कॉस्ट। सोचो, आप शर्मिंदा हो रहे हो, आप इंसल्टेड हो रहे हो, कोई आपको ऐसी चीज के लिए ब्लेम कर रहा है जो आपने करी भी नहीं। वेरी वेरी चैलेंजिंग, स्पेशली फॉर द ईगो। हार्मनी एट एनी कॉस्ट, यहां पे फिर होता है कि हमको ईगो को तो साइड पे रखना ही पड़ेगा, है ना। सो पीस एट एनी कॉस्ट। लेकिन हमारे साथ, बिकॉज वी आर नॉट यूनिफाइड इन द सेंस दैट वी हैव नॉट येट फाउंड अवर इनर बीइंग और द साइकिक बीइंग, सो देयरफॉर व्हाट तरु वाज शेयरिंग कि आपकी गाड़ी चल रही है बट व्हील अलाइनमेंट नहीं हुआ है। कभी लेफ्ट, एक व्हील लेफ्ट अलाइंड है ज़्यादा तो वो लेफ्ट चला जाता है, एक राइट की तरफ ज़्यादा मूवमेंट उसका है तो वो उधर चला जाता है, पीछे वाले ड्रैग करते हैं, है ना। व्हील अलाइनमेंट नहीं है, तो हमको बार बार व्हील अलाइनमेंट करना होता है जब तक वो हमारा एक स्वभाव ना बन जाए। बात करना होता है क्योंकि अभी हमारा स्वभाव नहीं है व्हील अलाइन। हमको बड़े मजे आते हैं अनयूनिफाइड रहने में, है ना, बड़े हैप्पी हैं। इनफैक्ट अनयूनिफाइड होंगे तो ऐसा लगेगा कि यार मैं कुछ गड़बड़ हो रहा हूँ, कि मेरी पर्सनैलिटी चेंजेस हो रहे हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, क्योंकि आदत नहीं है ना, आदत नहीं है यूनिफाइड रहने की। और यूनिफाइड होने के लिए आपको बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है, एम्प्टीनेस, वॉइड, ब्लैंकनेस, है ना, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द वाइटल, not interacting at times with any of the people that you would earlier interact with, है ना। बहुत सारी stages से गुजरना पड़ता है। Who is ready for that? Only few who are truly have maybe suffered enough, they would be ready. So unification is not an easy task, and only if there is a strong aspiration for it, really strong, कि आपने अब बहुत सफर कर लिया because of that ununified existence, तो आप बोलोगे कि नहीं अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई मदर सेज ईगो इज द हेल्पर, ईगो इज द पावर, बिकॉज ईगो इज समथिंग विच हेल्प्स अस यूनिफाई। एंड मदर हैज सेड समवेयर दैट पीपल हु आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स, है ना, किसी और के लिए वो क्या होंगे, यार ये तो बड़ी हेड स्ट्रॉन्ग है ना। तो जिनमें स्ट्रेंथ होती है ना, आप उनको क्या बोलते हैं, नहीं ही शी और ही हैज हिज ओन माइंड, दैट्स व्हाट वी से। But mother says that people who are strong individuals, who know where they want to go, who have a direction in life, they are the ones who are best when it comes to surrender. They are the one who should surrender. क्योंकि अब मिला ना डिवाइन को कोई बढ़िया तगड़ा सर्वेंट, ये कौन सा सर्वेंट है, कभी वो कहता था अच्छा आज इन्होंने बोला तो हम लेट उठ गए, आज उन्होंने बोला तो हम जल्दी उठ गए, कुछ अपना कुछ डिसिप्लिन ही नहीं है ना। सो वी मस्ट डेवलप a temporary strong individuality, whether it is an ego individuality, it does not matter, so that ultimately it gets tired of itself. That's what happens with strong individuals, क्योंकि fulfillment तो मिलेगी नहीं जब तक divine नहीं है लाइफ में, है ना। So then truly being a CEO or a very strong individual, there comes one day when you get tired of yourself. खूब रेस्पेक्ट देख ली, खूब नेम देख लिया, खूब फेम देख लिया, कहीं नहीं मिला, अब वो टर्न होते हैं towards the ultimate, now they are, and that's why we see in ashram we have like giants around Sri Aurobindo and mother. Each one is a giant. वो उनके प्रभाव में ऐसा नहीं पता लगता, बट अगर आप एक्सप्लोर करना शुरू करो तो एक एक जायंट है। ऋषभ चंद जी, निरोधा, to name the ones who are known, even more, but there are many more. द्युमन, चंपकलाल जी तो है ना, सबने नाम सुना हुआ है, प्रणब दा, ईच वन वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स। और ऐसा नहीं है कि क्लैशेस नहीं थे, क्लैशेस हर जगह होते हैं, बट देन एवरीबडी वाज वर्किंग ऑन देमसेल्व्स ऑल्सो। पता है कि हमको इससे आगे निकलना है, माना क्लैश दिख रहा है,
लेकिन उसमें रहना नहीं। सो वी मस्ट हैव अवर गुड इंडिविजुअलिटीज। दिस इज व्हाट यूनिफिकेशन मीन्स। कि अच्छा अगर डिग्री चाहिए तो मान लो जैसे करते हैं ना बच्चे, जिद करते हैं कि डिग्री लेंगे तो हम इस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेंगे। अब पेरेंट बड़ा तंग होता है, वो कहता है यार उससे नहीं मिल रही तो तेरे को दूसरी से ले ले, क्या प्रॉब्लम है ना। पेरेंट तंग हो रहा है, वो कह रहा है कितना सिर मारेगा दीवार पे, बट एक्चुअली में इट इज फॉर्मिंग हिज इंडिविजुअलिटी, because he is ready to give up his day and night and everything for where he wants admission. अब जो भी होता है वहां जाके, जो भी वो फेस करता है बंदा जब पढ़ने जाता है, वो भी अगेन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। नाउ ही हैज टू लिव अलोन एंड सी हाउ लाइफ इज विदाउट पेरेंट्स, है ना। So so that's why mother says passions are preferable than dull inertia, because when we are passionate, then we form, we shape ourselves. थप्पड़ भी बहुत पढ़ते हैं, but then कोई बात नहीं, थप्पड़ पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, पता लगता है आगे क्या करना है। तो कुछ लोग होते हैं वो थप्पड़ पढ़ेंगे इसके सोच के वो आगे ही नहीं बढ़ते, तो वो डलनेस है, वो इनर्शिया है, स्लॉपीनेस। सो हमको खूब पिटाई आसपास से अगर मिल रही है तो ये एक्चुअली में एक अच्छा सिग्नल है कि अगर आपके पेरेंट्स ने कहना शुरू कर दिया कि यार तू तो हाथ से निकल गया या हाथ से निकल गई, ये बहुत मतलब उनके ऊपर उनके लड्डू भी खिला सकते हैं आप उनको कि लीजिए आज आपके मुंह से शुभ संकेत निकला है। तो ये बहुत अच्छा साइन है व्हेन somebody is developing a strong individuality. It means it knows, the person knows where he wants to go, and through those experiences in life the person will grow in consciousness. And experiences are never good or bad, they are just experiences. तो जो जो करने का मन कर रहा है ना वो करना चाहिए, उसको सप्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारा साधन बन जाता है सीखने का। तो अगर मार पड़ेगी तो मार खा के सीखेंगे, है ना। और अगर सक्सेसफुल हो जाता है इन अदर वे तो बढ़िया है, उसके आगे और बढ़ेंगे। तो पिटाई खाने से कल भी हम यही बात कर रहे थे कि पिटाई खाने से हमको घबराना नहीं चाहिए, है ना। इफ यू आर इंसल्टेड, ह्यूमिलिएटेड, फेलियर आता है, आ जाए तो कह सकते हो जिए। जब यमदूत आएंगे तो कुछ बचा ही नहीं हो, बोलेगा ये तो खाली है, इसके अंदर तो सारी जान जी ली इसने, है ना। बट हम तो क्या करते हैं, हम सेव कर करके रखते हैं पूरी जान, और यमदूत आते हैं तो उनको लगता है वाह ये मिला तगड़ा बकरा इनको ले लेते हैं, इसको खाएंगे सबसे पहले जाके। तो टू really live a life fully in whatever way one is inclined to through the natural inclinations, सबके अलग होंगे और उसके लिए दुख भी सबको होगा। मदर ये भी कहती है when unification is happening, तो आप सबको थोड़ी ना खुश रख सकते हो, है ना। बहुत लोग दुखी होंगे। तो मदर ने बोला एक बार, किसने ये बोला मदर को कि कुछ था जो बात उसने मदर को बोला किसी साधक ने कि मदर दिस इज व्हाट माय फैमिली विल फील। सो मदर सेड कि लेट देम फील, डोंट यू वांट दे शुड आल्सो ग्रो, लेट देम इवॉल्व। तो I think it was Kripaklalji with मुझे याद Janayu. नहीं आ रहा, Kripaklalji had a Janayu हो and सकता है, mother said यस that, यस, why do you have it? He said, my हाँ dad, my father, it's a tradition. And she राइट, said, take it off. And he said, oh my God, mother, I cannot. हाँ Because she said, you're not taking off will hurt. You're taking off will hurt. But something she said that it will hurt, but if you take it off, then it will help them evolve. बिल्कुल 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 एग्जैक्टली, या थैंक यू। तो वही है कि हमें आसपास वालों को भी हैंडीकैप नहीं करना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ने देना चाहिए ना। काफ़ी बार आई कीप ऑन इंटरैक्टिंग हियर एंड देयर। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी फीमेल ने घर से बाहर निकलना शुरू किया है फॉर सम गुड वर्क दैट शी वांट्स टू डू, द क्वेश्चंस आर आस्क्ड कि अच्छा फिर नाश्ता कौन कराता है, तू मॉर्निंग में होती नहीं है तो नाश्ता कौन कराता है। मैं कहा खुद करते हैं 40 साल के लोग, 50 साल के लोग खुद नाश्ता नहीं कर सकते, है ना। हाउ अमेजिंग इज दैट। तो यू आर मेकिंग अदर्स केपेबल। सोचो, उनको नहीं पता लग रहा, वो आपको मन में गालियां दे रहे हैं, दैट डजंट मैटर, है ना। बच्चा
अगर उससे आपने लॉलीपॉप छीन ली, वो गाली तो देगा उस समय, लेकिन माँ को पता है कि भैया ये तो बिल्कुल ठीक है, तो तू दे ले। माँ भी कह रही है, अनकंडीशनल लव इसी को तो कहते हैं, तू दे ले गाली, कोई बात नहीं। तो गालियों से भी नहीं घबराना, जब पता है आप सही काम करने निकले हो, है ना, खाओ गालियाँ। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड हीरोइक हार्ट, जो कल हम बात कर रहे थे, वॉरियर स्पिरिट, कि ना हमें शर्मिंदा होने से घबराहट है। अब यूनिफिकेशन होती है ना, क्योंकि आपको पता लग रहा है आप कहाँ जाना चाह रहे हो, फिर आप उसके लिए कदम बढ़ा रहे हो, ये यूनिफिकेशन का ही तो प्रोसेस है। तो इसके लिए आपको करेज भी चाहिए, आपको इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन, रिजेक्शन, फेलियर, किसी से नहीं घबराना। लोग क्या कहेंगे, है ना, मेरी मम्मी क्या बोलेंगी कि इसलिए तेरी शादी करी थी, कि है ना तू घर गृहस्थी भी नहीं देखती। हाँ, नहीं देखती। तो बिल्कुल बेशर्मी होके जीना पड़ता है। और दूसरा ये भी है कि काफ़ी बार मैंने बात करी है तो लोग बड़े टेंशन में आते हैं कि मेरी मम्मी ये कह रही हैं या पापा ये कह रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ कि आप ये भी तो देखो कि वो कहाँ से आ रहा है। या तो होता है ना आपको श्री अरबिंदो ये कह रहे हैं, है ना, कोई योगी कह रहे हैं, कोई सियर कह रहे हैं, भाई जो कह रहे हैं वो भी तो आधे अंधकार में ही तो जी रहे हैं, तो आप उनकी बातों को इतना क्यों तवज्जो देते हो? कह रहे हैं तो कह रहे हैं, तो देखना चाहिए कि वो जो कमेंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। ईगोइस्टिक कॉन्शियसनेस से आ रहा है तो क्यों भाव देना है? और अगर ट्रू योगिता, योगी से आ रहा है ना, सीयर से आ रहा है, किसी ऐसे इंसान से आ रहा है जिसका खुद लाइफ एक एग्जाम्पल है, और वो आपको कुछ सजेशन दे रहा है, तब मैं फिर भी थोड़ा उसके ऊपर बैठ के सोचूं। तो ये नहीं बोलना चाहिए कि नो वी शुड नॉट जज, वी शुड नॉट जज। जज का मतलब ये नहीं है कि आप डिसर्नमेंट छोड़ दो, है ना, सब एक बराबर नहीं है। एक तरह देखो, पैराडॉक्सिकली दोनों ठीक है। आप हर चीज से कुछ ले भी सकते हो, क्योंकि हर चीज एक गुरु का फॉर्म है ना, कुछ ना कुछ आपको सिखाती है पैराडॉक्सिकली, राइट। बट सब लोग एक लेवल पे नहीं है, दैट इज डिसर्नमेंट। तो किसकी बात को कितना तवज्जो देखना है, आप उसको देखिए। हम खुद ही अपने में देखते हैं तो हम खुद ही इतने उछाल मारते हैं ना, कभी किसी लेवल में होते हैं, कभी किसी लेवल में होते हैं, तो दूसरा बंदा भी वैसे ही है। सबको वी हैव टू गिव बेनिफिट ऑफ डाउट फॉर इग्नोरेंस, नो, एवरीबडी कैन फॉल, नो मैटर हाउ हाई वन में बी। तो इवन, है ना, कोई बहुत ज़्यादा आपके सामने एक सिंसियर साधक भी बैठा हुआ है, आप लाइफ भी उसकी एग्जाम्पलरी है, नो डाउट, है ना, इवन इफ उसके मुख से भी कोई कमेंट आ रहा है, तब भी मेरे पास तो अपना इंटेलिजेंस और डिसर्नमेंट है ना, तो मैं कैसे अपने आप को, कैसे मैं डिसअपॉइंटमेंट में जाने दूं कि नहीं उसने उसने मुझे ये बोला, मतलब कैसे? अपना भी तो दिमाग है आपके पास, वो नहीं जा सकता, वो भी तो इंसान है, इग्नोरेंस में नहीं जा सकता क्या? खुद कितना जाते हैं हम, एट टाइम्स हम बिल्कुल ज्ञानी बन जाते हैं, एट टाइम्स बिल्कुल अज्ञानी, कुछ नहीं दिख रहा, अंधकार घोर। अपनी बात कर रही हूँ। तो जो भी सुनना समझना अपना दिमाग लगा के। अब इस समय कौन सी स्टेट में हूँ मुझे क्या पता। Yeah. I So also this is, feel this yes. question of having an aim in life, it's really big. I think we even discussed in one of the harmony circle with Taru. But if we really see closely, for all of us, I think the true aim of life is the growth of consciousness or the unification with the divine. That is the aim we are here for on this earth. The question that should come is how I will achieve it or how I will do it. That will differ for everyone because divine likes diversity. He has created the world in diversity. So we have our own, Sabhava and Prakriti, and that will differ. Like, for example, somebody can really find that unification with divine through bhakti or, through service. For somebody, it could be attaining of knowledge, reading, or different acts. So I think that is, I feel that should be our focus, that how do I find that inner communion
that gives me peace and happiness. Aim is clear, that is I want to do. Okay, there could be something, okay, I want to do this objective, that's something small, but the true aim that we are here for is just the unification with the divine. It might in this lifetime or another 10 lifetime, 100, doesn't really matter. So I think that's something that has really helped me understand that everything else is impermanent. It is not a real aim of my life. So that's something. And other thing also, that how I'm going to do it, sometimes, like even with Jagan, even with myself, everybody, we've raised this question, there's a lot of eagerness, I want to find it, I really wants to find it. But really, of course, it's an evolution. You start with this, you start with effort, but really, even we cannot know how can we truly commune with the divine. It has to come from her. I feel like that. Because, like, for example, I had this understanding from the nice video you sent, very beautiful documentary of Nirodha that you sent, and how when Nirodha was sent to the timber factory, he was a doctor, he was a trained doctor. And of course, in ashram, everybody knows that, the aim of his life is to yoga, is to have the communion with them. That's why they are in the ashram. But when he was sent to the timber factory, he was really hurt. I mean, he was not very happy, because, he thought, why a lot of time this question came, that why this work is for me, I am a trained doctor, why is this given to me? But again, that doubt of how I want to do, because he thought, oh, we have, how I want to achieve that aim, by maybe becoming a good doctor, because, I'm a trained doctor, that's what I want to do. But the divine thinks otherwise. Divine thinks, no, you right now you should go to the timber factory and work. So for a lot of time we will be in darkness, and so it's so nice that, we see that there's so much doubt still there in him, that many times he asked Aurobindo that, are you sure, why am I here, in that documentary. But towards the end, it is Aurobindo who writes that, not only you have been benefited by being in the timber factory, but the timber factory have been benefited by you. And then he sent somewhere else. Finally, of course, he serves Aurobindo, he's with him, and then of course he starts writing poetry, and he really sees the flowering on his consciousness. Never thought that he could be a poet, but he became such a great poet of such high level. So what I wanted to say is that the aim is clear, I feel, but even how I want to do it, which job should I do, which profession should I choose, should I get married or not get married, this whatever, how, this question of how should also come from the divine. Because if it will come from that, and if we can really tune into it, which is very hard because ego is always there, telling you to this, it will really make it easier than, always banging your head on the wall. So yeah, just I had that from that, especially from the Nirodha documentary, this thing came into my mind. इतना कंफ्यूजिंग है सब कुछ, और डिवाइन विल जानना इतना आसान नहीं है. तभी सबसे छोटा जो बेबी स्टेप है वो ये है कि आप अपना एटीट्यूड कोई भी काम के प्रति चेंज कर दो. जो आप एग्जांपल दे रहे थे कि निरोधा इन टिम्बर फैक्ट्री है ना, सो ही वर्कड ऑन हिज एटीट्यूड दैट फॉरगेट माय डॉक्टरशिप फॉर सम टाइम एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू डू. दिस बिकम्स वेरी चैलेंजिंग फॉर मैनी ऑफ अस, क्योंकि हमें बिकॉज वी कैरी अवर पास्ट विद अस ऑल द टाइम. तो एक्चुअली मेरे दिमाग में अभी क्या बैठा हुआ है, मैं कौन हूँ, मैं हूँ डॉक्टर, है ना, और मेरी क्या बैकग्राउंड है, मैंने इसमें एजुकेशन करी हुई है. सो यू बेटर बिहेव विद मी विद अ PhD फॉर एग्जाम्पल, है ना, वो हम सारा कैरी करते हैं. तो अब मान लो आपको कोई एक ऑफिस वर्क दे रहा है, ऑफिस में आपको क्या कह रहा है, आपको ना क्या करना है, इसको एक्सेल शीट में डालना है कि कौन सी डेट को क्या सामान आया. आप बोलोगे एक्सक्यूज मी, आपने मेरा CV पढ़ा था? वो हमसे होता नहीं है. तो दिस इज वाई अवर एटीट्यूड नीड्स चिजलिंग. एंड जो आपने एग्जाम्पल शेयर किया, वहां पे वही एटीट्यूड चिजल हो रहा है कि अभी फॉरगेट योर डॉक्टरी फॉर सम टाइम, अभी आपको ये काम दिया है. और फेथ हेल्प्स हियर, है ना, कि अगर आपको फेथ है कि डिवाइन इज ऑफ कोर्स अनसीन हैंड इज गाइडिंग मी, है ना, तो अभी जो मेरे को काम मिला है, क्या मैं उसको बेस्ट तरीके से कर सकती हूँ? हम क्या करते हैं, हम ना उसको बेस्ट तरीके से करते हैं, और ना हम आगे के लिए कदम बढ़ाते हैं कि क्या हम करना चाहेंगे जहां हम बेस्ट होंगे. हम बीच में लटक के कंप्लेन करते हैं. वो सबसे ज्यादा गलत जगह होने की.
कि मेरे ऑफिस की टीम खराब है और लोग ठीक नहीं है, तो ना आप भाव चेंज कर पा रहे हो, श्रद्धा भाव ला नहीं पा रहे। जहां श्रद्धा भाव हो सकता है वहां आप अपने आप को पुश नहीं कर रहे, अटके वहीं हुई हो, दो नाव में सवार। तो ये बड़ा तकलीफ देह कंडीशन है ये वाली, है ना। तो या तो हो कि आपने, अच्छा मान लो आप जो भी डिग्री कर रहे हो आपने अच्छे से करनी है, ठीक है, आपने एटीट्यूड चेंज कर लिया, अच्छा जब तक हूं कम से कम तब तक अच्छे से करूं, और या फिर छोड़ दो और भागो जहां पे भागना है, एक्चुअली में भागो। अगर कोई चीज है जो कॉल कर रही है उसकी तरफ जाओ, भागो, क्योंकि कुछ है एक्सपीरियंस जो तुम्हारा वेट कर रहा है। तो अगर आपके स्पिरिचुअल सीकर्स फ्रेंड्स ने बोल दिया कि नहीं, यू शुड नॉट गेट मैरिड, अरे बहुत दुविधा है, मत कर मत कर, आपके मन में वो अटका हुआ है, शादी, कंपेनियनशिप, बस कर लो, क्योंकि फिर वो अटके हुए से तभी राहत मिलेगी जब कर लोगे। वो एक्सपीरियंस चाहती है, मतलब कुछ ना कुछ आप एक्सपीरियंस, क्यों चीजें अटकी रहती हैं हमारे दिमाग में, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस है जो आप लेना चाहते हो उससे, जो कि आपको सिर्फ इंटेलेक्चुअल फिलोसफाइजिंग करके नहीं मिलेगा। यू हैव टू गो थ्रू, यू हैव टू डिप योर सेल्फ इन द स्विमिंग पूल, देन ओनली यू गेट टू नो हाउ टू स्विम। तो अगर कोई चीज है जो बहुत तड़पा रही है और चैन नहीं लाने दे रही, श्रद्धा भाव नहीं आ रहा काम में, उसकी वजह से दिमाग पूरे टाइम क्लाउडेड रहता है, तो या दो चीजें हैं, या तो अपने एटीट्यूड पे काम किया जाए, माइंड को टेम किया जाए, और अगर नहीं हो रहा तो भाग जाओ उस तरफ जो वो एक्सपीरियंस बुला रहा है। बस वहां से जब पड़ेगा ना, बहुत अच्छे सीख होती है। और क्या पता कि वही आपका मिशन हो जो बुला रहा है, हु नोज, कि थप्पड़ नहीं पड़ना हो, मोस्टली थप्पड़ पड़ना होता है, बट हु नोज। तो ये जो अध जली जो स्टेट है हमारी, कबीर जी कहते हैं, लकड़ी जल कोयला बनी, कोयला जल भयो है राख, मैं अभागन यूं जली, ना कोयला बनी ना राख। ये हमारी सिचुएशन है मोस्टली, ना इधर के पूरे हैं ना उधर के। कबीर जी दूसरे में कहते हैं, ना माया मिली ना राम, तो खाली हाथ है, ठन ठन गोपाल। और जो हम अभी बात कर रहे थे, यूनिफिकेशन विद द डिवाइन, है ना, आपके लिए वो एम हो सकता है इस लाइफ में, बट नॉट फॉर एवरीवन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम, आई थिंक शारदा जी से नेक्स्ट लास्ट, आई डोंट नो विच सेशन वी वर टॉकिंग, दैट इफ समबडी इज जस्ट इंटरेस्टेड इन बाइंग साड़ीज ऑल द टाइम एंड यू वंडर कि भैया कितनी जमा करोगे, तो वो आपको लग रहा है, बट अभी वो बंदा नहीं थका है, उसके लिए अभी भी कुछ एक्सपीरियंस में रह गया है जो उसको पूरा करना है। तो nobody can be pushed into this, only those who have a call will be pulled। और of course as was shared in the beginning, वो जो detour वाला है कि जा सब वहीं रहे हैं, बट कुछ हैं जो अब मान गए हैं कि हमें वहां जाना है और चलो कोलैबोरेट कर लो, कुछ हैं जो अभी नहीं, उसको बाद में देखेंगे, पहले ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। और जज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमको नहीं पता हमने कौन सी लाइफ में साड़ियाँ खरीदी हैं खूब, हाउ कैन वी जज, हमें तो पुरानी लाइफ से नहीं पता अपनी, हमें क्या पता कितने जूते और चप्पलें इकट्ठे करी थी हमने पिछली लाइफ में। अब इस लाइफ में हमसे छूट गई हैं तो हम उनको ऐसे देख रहे हैं कि छी नीच इंसान हम भी तो नीच ही थे किसी जन्म में, और अभी अभी कौन से बड़े महान है हमें लगता है कि हम पथ पे हैं, महान महान, बी अवेयर, वेयर इज द फूल माला एंड एवरीथिंग। वो गधे वाली जो है ना सिचुएशन, तो गधा खुश हो रहा है, पीछे राजा आ रहा है, उसके लिए फूल बिखराए जा रहे हैं, और वो गधा कि ये मैं हूँ। So to be grounded is very good, to know our weaknesses, where we are, all the darkness that still lies, still to be conquered. It's very good from time to time to know that and to totally be grounded. Monica, I have one doubt.
So from this conversation between Nandini and you, I understood that each one has a different journey, and it is not necessary that in this living space that we are in, everybody has to reach the divine, or that is their calling. पर अगर ऐसा हो कि सोचो इस जन्म में थोड़े बहुत प्रोग्रेस हुई, एंड you start into this spiritual aspect, you're trying to understand, but you have not still attained a certain place, you're still in the quest, और फिर ऐसे हो जाए कि अगले जन्म में again you end up doing नॉट सो गुड थिंग्स, तो फिर तो ये अनएंडिंग साइकिल हो गई ना। मतलब तुमने एक जन्म में थोड़ा प्रोग्रेस कर दिया, फिर वापस दूसरे जन्म में रॉन्ग चॉइसेस करके गलत चीज में घुस गए, फिर वापस, तो ये कहीं मतलब इट इज नॉट अ लीनियर प्रोग्रेशन, it seems like it goes so up and down. And how do we, knowing now that this is how it will be, how do we make sure that through every janam that you take, you're going closer to the divine instead of just bobbing back and forth? आई थिंक एवरी जन्म की तो बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि है ना, वो बहुत दूर की बात हो जाएगी, ख्याली पुलाव हो जाएंगे, है ना। अब मान लो मैं 10th में हूँ और मैं बोलूँ मैं कैसे 11th और 12th में 98 एटलीस्ट लाऊं, तो यू वुड नो द आंसर वेरी वेल कि भैया 10th में मन लगा के अध्ययन करें। तो आगे आने वाले जन्म का तो बिल्कुल नहीं पता, अभी का जन्म हमारे सामने है और दिखता भी है कि हमारे पास बहुत समय है वेयर वी कैन एक्चुअली मेक द राइट चॉइस, एंड वी विल स्लिप एज यू सेड, बॉबिंग, वो जो अप एंड डाउन है, मतलब यू कांट गेट रिड ऑफ दैट सो सून. So to be very grounded in knowing that I will slip, I will forget, but I will dust off my pants, I will rise up again, and I will again make the right choice. I will slip again, but I will shamelessly get up again and make the right choice. तो अभी का तो काम कर लें, और फिर अब भाई एक एक बूंद अगर आप ध्यान से चल रहे हैं तो फिर ओशन तो फुल ऑफ अमृत होना ही है ना, आगे वाली लाइफ भी अच्छी होगी. अच्छी का मतलब इन द सेंस, नॉट इन अच्छी इन द सेंस कि बहुत बंगले गाड़ी होंगे, और इन द सोशल सेंस दैट वी सी. फॉर एज Aurobindo says, फॉर सोल देर इज नथिंग लाइक अ गुड और बैड एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस. अच्छा, इस बारे में राजा बन गए, एक्सपीरियंस. इस बारे में भिखारी का जीवन, एक्सपीरियंस. तुम्हें क्या लग रहा है भिखारी बुरा है और राजा बहुत महान है ना? वो उस तरह से नहीं देखा जाता. तो अभी जिसको जो भी एक्सपीरियंस अभी मिला हुआ है ना, हम सबकी लाइफ अलग अलग डायरेक्शन में चल रही है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं अभी की लाइफ में सबके. उनके थ्रू हाउ कैन वी मेक मोर एंड मोर राइट चॉइसेस, इन द सेंस व्हाट वी वर टॉकिंग इन द वेरी बिगिनिंग, कमिंग फुल सर्कल, कि डीपर, लिविंग डीपली विद इन, and begin to make choices from that space rather than from the space of insecure surface consciousness. और फिसलेंगे, एंड या फिसलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब फिसलना इज अलाउड. या तो मतलब क्या ये ऐसा हो सकता है कि सोचो जो अभी मेरी लिविंग स्पेस है, आई एंड अप डूइंग सम रॉन्ग actions, it does not necessarily mean that that is turning away me from the divine? I feel that actually that may be even exponential for your growth. Right, yeah. That I have felt that so-called wrong actions, if you really are a seeker and a learner, है ना, रॉन्ग एक्शन हम किसको कहते हैं कि आप अपना हाईएस्ट पॉसिबल नहीं चूज कर पाए उस मोमेंट में, है ना. जो डिवाइन कॉन्शियसनेस आपके अंदर है वो वाला आप कदम नहीं चूज कर पाए. क्यों? क्योंकि बहुत इनसिक्योरिटीज थी. चलो मान लिया, ठीक है, एक्शन ले लिया आपने इनसिक्योर स्पेस से. मजे की बात यह है कि अगर इनसिक्योर स्पेस से एक्शन लिया गया है, सूनर और लेटर इट विल ब्रिंग यू मिजरी एंड पेन, and that will begin that will bring even more an intensity and concentration in your sadhana. वो बताएगा कि कितना दर्द होता है जब आप रॉन्ग एक्शन लेते हो.
वो दर्द आपको कंपेल करेगा आगे बढ़ने के लिए, टू अपलिफ्ट योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जीत ही जीत है यहाँ पे। अगर सही एक्शन करते हो तो जीत है ही, है ना। वी इफ यू चूज द राइट स्पेस फॉर डिसीजन फ्रॉम विद इन, जीत, कि आपने डिवाइन का साथ दिया। अगर आपने इगोइस्टिक कॉन्शियसनेस से कोई एक्शन लिया, पैशनेट होके, डिजायर से, इनसिक्योर होके, फियरफुल होके, एम्बिशन में, है ना, रेस्पेक्ट चाहते हुए, कुछ भी किसी डर से अगर आपने एक्शन दिया, बी श्योर दैट इट विल सून bring you lots of misery, and that is why it is called compassion of the divine. Misery is compassion of the divine, क्योंकि वो आपको बताती है कि बेटा ये सही नहीं, कुछ गड़बड़ थी अंदर, वो इम्प्योरिटी को साफ करो और आगे बढ़ो। क्योंकि दर्द हमें पसंद नहीं आता है ना। दर्द, ये बड़ी अच्छी बात है कि दर्द हमें पसंद नहीं आता, क्योंकि सोचो अगर दर्द में ही रहने की आदत पड़ जाए तो क्या प्रोग्रेस पॉसिबल है। क्योंकि दर्द नहीं पसंद आता, इसलिए हम करते हैं कोशिश अगली बार कि अच्छा लास्ट टाइम मेरे को क्यों दर्द हुआ था, लेट मी चेक, है ना। आप अंदर अपने आप को टटोलते हो और फिर आप कहते हो कि अब नहीं, अब नहीं, है ना। लेकिन हम इतनी आसान से संभलते नहीं है। हम बहुत बार वो रिपीट करते हैं और फिर जाके फाइनली वी रीच अ स्टेज कि भैया अब बिल्कुल नहीं, नमस्ते, अगला दरवाजा देखिए। टाइम लगता है, वी आर फॉरगेटफुल, वी हैव टू बी There वेरी is also, कंपैशनेट। यस। but he asked a question from the mother that how can you say that victory is certain? And you know, her response, like it brings me shivers. She said that because the divine victory is not dependent on human effort but on divine grace. Also, I would recommend the last chapter of the book you sent, Mother's biography. Such beautiful, about, you know, how about her doing the transformation yoga, that, you know, in every cell how she was trying to bring the light. It used to not happen because there was so much resistance from the humankind, and yet she kept enduring. But you know, she did not even ask for even smallest thing from anybody around. And so beautiful how she has written it. So, like, you know, I also have this question what Deepa said. Sometimes I would always say that, you know, my God, okay, little bit aspiration has maybe begun, but what if it will, you know, get extinguished? I will get lost, and I do get lost. We all do get so many times in a day, in a minute, if we get lost. But then, you know, this thing that mother's answer, and Alokda also said that, you know, we cannot rely on our effort, and that's the beauty. So you cannot really rely on effort, but we can rely on her grace, and that's the beauty. Because if you take one step, just one step, if you've taken, just be certain she's taking 100 steps, 100 steps, not even 10, but 100 steps she's taking towards you. So once we know that okay, I'm gonna make mistakes, but if I'm even trying, like how Monica said, if you are trying, she's taking 100 more towards me, so I am protected. What will happen, she is gonna carry me, because my effort will fail. No matter how much nicely I try, no matter how much earnest I am bound to fail. But you know, like, we are in safe hands. So yeah, just thought of sharing that. I think this thought is so comforting ki, I mean, whatever our efforts are, we don't have to be insecure that that is going to take us away from the divine. The divine is always going to guide us back into our path in one form or the other, maybe through pain, maybe through suffering, maybe through something else, but we will be guided back. So I think that insecurity also needs to be shed off for us. You had mentioned, yesterday's session, the heroic heart, and you had also shared, those 7 practices of Bodhisattva or mind training, the video you had shared. It had a line both yesterday and that even at the cost of my life, I must not, abandon, say, the dharma or say my thing. I think we need to
increase our stakes, right? Like we kind of, because of, like the word, like say comfort or हाँ चल तो रहा है, I mean, that's okay, that's how it is, but taking some time, like, in that video, Jet Sunmala had said that, when we wake up, it's like we should put up an armor, right? Like every day, okay, today, I'll be watching my Kaleshas. Today I'll be seeing कि, कल जो जो किया था वो मेरे दिमाग में है. आज again this morning में when I'm waking up, I'm taking a fresh resolve that again I will be at it कि कुछ इधर का उधर ना हो. I'll be on my guard, and even at the cost of my life, I will not abandon. In her video, she said dharma. It could be anything that I feel is bigger than me. So this reminder, I feel need, like, because one is a big picture, right? Okay, I remember I have this aim which is very big, but then on a day to day, I keep slipping. It feels like, it's like again and again one sees कि हम खुद को कैसे बेवकूफ बनाते हैं. This is one of it. हाँ मुझे तो पता है, हाँ मुझे तो पता है. If there's a conversation, I'll sit with this, thing कि हाँ, I know everything, and yet I keep forgetting, I keep slipping. So these reminders that, yes, the stakes are high, like let me choose the highest, if possible, when possible. Sometimes we see it's not possible for us right now. सामने दिख भी रहा होता है, बहुत clearly दिख रहा होता है, and yet there are, things that are sweeping us, and you're sweeping and you're seeing, okay, this is where I need to go, but see, this is where I'm going. That's okay, of course. I mean, till we don't get sweep, everything, like all the stumblings are towards my perfection. But on a daily basis, that one-to-one with oneself, 2 minutes, 1 minute of, okay, this again, a new day, or, something, I feel that was how we had started. And even, what you shared about what people would say, or my parents are saying this, I very strongly resonated with that too, that these are the small things that pull us down. They keep us tied to where we don't want to be, and lifetimes can be wasted because I want to be regarded as a good child, as an honest child, as a good person that who did this for her family. So भाई वो दो चार लोगों के दायरे में रह के जो हम पूरा बर्थ वेस्ट कर देते हैं, आई वंडर बॉडी छोड़ने के बाद कितना सिर पीटते होंगे कि फिर there's this book, I don't know what it's called, it's considered to be one of the biggest one for spiritual, those levels and stuff, I forget the name. Usme bhi it says कि a lot of us take birth on earth to rise in consciousness, because on earth's plane that is possible, and yet most of us, we end up lowering the consciousness. So that risk is there when we decide to take this birth. And yet, of course, some of us would transcend, but this thing. And just last thing on this, in one of these sessions, I think it was Ramayan or something, there was this thing which said, there was a chopai that said that, a child, a seeker is crying in front of God, and he's saying कि जो मेरी माँ थी, वो तो कू माँ थी, तू मेरी माँ बन, kind, because my mother can only guide me to where she can guide me, and she hasn't reached anywhere yet, and I know that. So for me, she's not helping, but I want you to be my mom. I want to be your child, and you guide me to where I need to be. So sunne mein it seems very weird that why would I say, oh, my mom is a cool mom, but we need to see that if I'm listening to something, if I'm following certain dictates of the society, of the world, of people, where are they? Do I want to be there? And mostly the answer is no, I don't want to be there. Then why am I standing here and complying or following the dictates? That doesn't reasonably, basic reasoning say be, when we call ourselves very reasonable people, most of us, it doesn't make sense. So just opening the eyes and seeing more clearly where we are going and where we want to be, that only बहुत jaldi it helps in kind of sorting the mess, and at least one can start taking baby steps towards where one want to be. Baki to
however long it takes, it takes. So I think I would want to end here today. A lot was said, a lot to reflect on and to, I don't know, because then we'll take the passage freshly next time, because the will passage in itself is a very good one. And although we have already covered a lot from that through this discussion, but we look at the lines next time. So if there are any last comments, any reflections, they are welcome. Okay. Yeah. So just taking a last minute to just, thank grace, thank the, this joy, this beauty of having such company, such opportunities to see light, to see the mirrors, to see ourselves more clearly, to the words of the mother that guide us, that are like torches which are guiding our way. So may I be able to expand and reach higher potentials of what I am fully capable of, trusting not just my efforts or not my efforts, but trusting the grace, that grace is what's making the world go round, and it is. So with this gratitude, offering ourselves and offering any merit that we might have accumulated to everyone, may all beings be well and happy, truly well and truly happy. Thank you.